दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where music box
film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV card December 14, 2012, United States. Running time 97 minutes. Country United States. Language English. Budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Goroship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV card December 14, 2012, United States. Running time 97 minutes. Country United States. Language English. Budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Goroship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV card December 14, 2012, United States. Running time 97 minutes. Country United States. Language English. Budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett
Dulahunt star as a guy couple who assume Goroship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews. आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, written by Travis Fine, George Arthur Bloom, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by edited by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 $147. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a guy couple who assume Goroship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews. आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, written by Travis Fine, George Arthur Bloom, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 $147. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a guy couple who assume Goroship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews. आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, written by Travis Fine, George Arthur Bloom, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747
$147। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by
edited by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV card December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV card December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV card December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at
received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome, only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival, where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome, only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival, where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt
star as a guy couple who assume Goroudship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews. आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by edited by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Goroudship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews. आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Goroudship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews. आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747.
$147। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by
edited by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome, only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival, where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome, only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival, where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome, only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival, where Music Box Film acquired distribution at
received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV card December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV card December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV card December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt
star as a guy couple who assume Gorodiship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodiship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodiship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747
$147। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, who rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome, only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival, where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, who rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome, only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival, where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747। edited by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, who rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome, only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival, where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by
edited by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited
theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome, only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival, where Music Box Film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome, only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival, where Music Box Film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TV cut December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume
Goroudship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews. आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, written by Travis Fine, George Arthur Bloom, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747. $147. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Goroudship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews. आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, written by Travis Fine, George Arthur Bloom, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Goroudship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews. आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, written by Travis Fine, George Arthur Bloom, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.
दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company
PFM Pictures, distributed by Music Box Film. Release date April 20, 2012. TBK December 14, 2012. United States. Running time 97 minutes. Country United States. Language English. Budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Goroship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Goroship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Goroship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय
Travis Fine, written by Travis Fine, George Arthur Bloom, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by edited by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget 2,01,747 सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Gorodship of a teenage boy who has Down
syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume guardianship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law court. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution and received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनी डे नाउ
हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। एनी डे नाउ इज ए 2012 अमेरिकन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन हु rewrote the original screenplay that George Arthur Bloom had written 30 years previously. Alan Cumming and Garrett Dillahunt star as a gay couple who assume Goroudship of a teenage boy who has Down syndrome only to find themselves at odds with the biological mother and California family law courts. The film premiered at the 2012 Tribeca Film Festival where Music Box Film acquired distribution at received a limited theatrical release on December 14, 2012 to positive reviews। आज इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ट्रेविस फाइन, रिटन बाय ट्रेविस फाइन, जॉर्ज आर्थर ब्लूम, produced by Travis Fine, Christine Fine, Liam Finn, Chip Horan, cinematography Rachel Morrison, edited by Tom Cruise, music by edited by Tom Cross, music by Johnny Newman, production company PFM Pictures, distributed by Music Box Film, release date April 20, 2012, TBK December 14, 2012, United States, running time 97 minutes, country United States, language English, budget $2,01,747। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।